sailing to an uncharted island with strange folk aboard? Keep your voice down. I just want the captain to hear you. It ain't the captain I'm worried about. It's our priest. If he's a man of the cloth, I'm the Virgin Mary. All you seek will soon be yours, Captain. It is indeed the island of legend. So you say. If you're wrong, the price of the voyage will be paid in blood. Yours. And those vagabonds you brought along. They merely seek adventure, Captain. The island calls to those who forge their own destiny.
to me, priest! I warned you the journey would be difficult. You said nothing about sailing through the very gates of hell! Hell is all but inevitable for one such as you, Aldous Thorpe. The island offers something much greater than gold. Redemption. For me, and perhaps even for you. Do not fear the storm, Captain. Faith will see us through.
हाँ भाई, ये न्यू वर्ल्ड भी ट्राई कर लेते हैं, देखते हैं कैसा है न्यू वर्ल्ड। यहाँ पर लड़ाई होगी लगता है। You must become something greater. The fountain. Drink and accept my gift. Feel your blessings surge within me. Everlasting glory will be ours. Ah, pathetic.
अरे बाप रे बाप. What is mine? And now, you will join me. No matter. You will be mine soon enough. Eat steel, demon! A strong one, are you? Death and back, and you still have your soul. You should be proud.
Let the air fill your lungs, friend. You have conquered death and been born again like new. No small feat. You died, and it won't be the last time. But this is Aeternum. No one gets away that easy. You're on a ship, smashed by the storm wall, of course. Like everyone else here. Maybe you forget. Could be a blow to your head killed you. But it will pass. Your soul is strong. That's what matters. Most aren't so lucky as we are. They are reborn as something else. The corrupted. Or worse. But come. We should not dwell on such dark matters. But you must be starving, friend. I always feast after dying. We must fill that belly of yours before it disappears. Don't worry. Many boars roam wild just off the beach. They're a little on the skinny side, but juicy if you cook them right. Yes, and you will also want a skinning knife, because boar skin tastes like, hair, mostly. Gather flint and wood, and then join me and Erda at our campfire. Shit. Let us see what you have there. A crude knife, but made well enough. Of course it's well crafted, Erda. They were following my instruction. More likely a natural, this one. That's good, stranger. Now you will need wit and skill if you would not languish on Aeternum. The town of Brightwen up the road is mostly safe, but out here, we are on our own. No, I've never been well suited to village life, but many here seek the refuge of a community to feel safe. They fool themselves. Nowhere is safe on Aeternum. We may escape death, but pain and suffering, and even madness lurk everywhere. Yes, we are all a little mad on this island. But yes, those beasts trample everything in sight. You won't have to go far to find them. Hunt and skin a boar, then cook your meal over the fire.
successful hunt? And... yes, it smells like you cooked it just right. If there is any left over, give it here. Best not to let it go to waste, you... Hunt and cook your own boar, lazy bastard. If there's any food left, you keep that for yourself, newcomer. Ah, Erta is teasing me, of course. I'm just taking a moment to recover my strength before wading back in to cut down the corrupted. During rebirth, their souls become claimed by evil. They are like demons, possessed only with the desire to spread their madness. इसको क्या पता अभी आधा देखेगा पता चलेगा वैसा ही गेम The wreckage of your ship is just across the water, but there is nothing and no one that can be saved. All you can do now is put your former crewmates to rest and hope they don't return. If you want to do the deed yourself, I would understand. Keep your weapon at the ready. As long as you don't get overrun, you should be fine. बनाए नहीं कैरेक्टर बड़ा अजीब सा बना है वीपन कौन सा लिया है हाँ ये वीपन ये लाइफ ऑफ स्टाफ बोल के कुछ है ये मिस्टिकल स्टाफ ऑफ लाइफ और डेथली वॉइड गॉन्टलेट मस्केट नहीं लिए नहीं मस्कट नहीं लिया मैं इसमें भी वही वाला हाल होता है एलेक्सा जो वीपन लेंगे ना उसी वीपन को बढ़ाते बढ़ाते आप चला पाएंगे तो शुरू से जो एक वीपन ले लीजिएगा उसी को पकड़े रहिए एक साथ 4 एबिलिटीज यूज कर सकते हैं एक वीपन पे 4 फिर चेंज करके दूसरे वीपन के लिए नया कैरेक्टर बिल्डर भी दिया है क्या हाँ करप्टेड मरीन को हराना है हाँ 75 ही इसमें अपग्रेड नहीं करना होता है ऊपर मतलब नीचे जाएगा उसको कैसे इसको अभी कोई स्किल नहीं ओपन हो गया है वीपन की पॉइंट असाइन करते हैं कि नहीं करते हैं लोग हाँ वो करूँगा यहीं पे आएगा वो भी
क्यों दबा के होगा। देखिए क्या करता है क्यों दबा के। जाइए मारिए। ओ होगा बाबा। उसकी याद आ गई एलेक्स। कुछ याद आया आपको ये बुलेट देख के? हालो याद आया? हालो रिंग का वो जो था, ऐसे तो उसका भी था ब्लेड। इधर वाला चक्रा कर लीजिए ना, फेंकने वाला। ये वाला ना, दूसरा वाला डिकॉय नहीं, देखिए डीके के बगल में, इधर देखिए एनाइलेशन में ही एक चक्र ऐसा बना है, दर्शन ऐसा। ये वाला नहीं कर Activate- सकते वो। अच्छा अच्छा ये वाला कर सकते हैं। देखते हैं। क्या करता है पता नहीं, देखना पड़ेगा। चारों तरफ रिंग बना ली था। सप्लाई क्रेट ले लीजिए, कुछ तो मिलेगा। गोल्ड मिला, पोशन मिला। मैं कार्ड ले लेना जल्दी से, कहीं का ढूंढ रहा है खत्म पड़ गया। नेट बना काट दे साले को जैसे मिलता है। इसका डैमेज देखो, इसका डैमेज ज़्यादा है मेरा। ओह माय गॉड, 135 95। हाँ शायद मर गए। टॉक टू स्ट्रॉन्ग। See, Urta, see! I knew our friend Shall we here sort would the- prove worthy. Who better to tutor a newer rifle in the ways of Aeternums than us? चलिए देखिए फिर से खेलिए। Indeed, but know this, new blood. The island's Thank you. lessons never end. Our lives persist, Mic बंद कर but रहा हूँ। time चलो, marches on. ठीक है। This new corruption spreads like fire, and as you can see, it is now at our doorstep. It's quite मैं डिस्कॉर्ड बंद concerning. कर रहा हूँ। एक आध Must घंटे you मारता हूँ be तब तक, so लेकिन आपका grim? बंद You'll scare off our new friend here. We always find a way through, do we not? In fact, I heard pistol shots a few minutes ago. There may still be others out there in the wreckage who have not lost their souls. I agree. There are many shipwrecks, but if we move fast, we can cover them all by the day's end. Stop being so thick-headed, Elstrom. Those ships will just be followed by more. Until you find the cause of the corruption, it will only get worse. Yes, we will spread out. You can search for survivors, my friend. As Urta reminds me, I must search for the source of this menace. I'm not sure which undertaking is the greater risk. But it's no matter to me. I will remain here at the camp. I am sorry we cannot venture forth together. But while you search for survivors, I will find our next challenge. I will meet you back here.
our souls are bound, I am with you. I am within you. Eat ledger, bastards! So, here I am, fighting off the demon hordes, and I'm thinking, how the hell do I get down from up here? So what do you say? Maybe give a girl a hand? Eat ledger, bastards! Back on the sand. You have my thanks. I know a safe spot this way. Come on! Well now, can't tell you what a relief it was seeing someone who was still human. I was beginning to think I was all alone out here. The rest of the perfect. I was betting there'd be some kind of folk somewhere on this rock. Figured I'd go look for it after I'm done out here. This isn't my first shipwreck, you know. One thing I've learned, you have to always think ahead, keep an eye on the horizon. And there's booty to be had here. Countless treasures captain and crew had stashed on board, if you know where to look. Of course! Not like these rotters care a damn for it, and I'll be needing a new ship, a new crew. That takes coin. In fact, if you want to partner up, I'll split the loot 70-30. Or what the hell, 60-40 even. What do you say? Then we can go head to that campsite of yours. That's the spirit. It's a deal. I need to circle back to my own ship to grab what I can. But there's a wreck over there I haven't searched yet. My first mate went that way, but something happened to him. Don't let it happen to you. Get the ship's manifest, any valuables, and meet me on the other side.
Spec me. Expect me. Lovely. There you are. I was starting to worry. More importantly, though, what did you find? Let's see here. Oh, yes. These are definitely worth a coin or two. Soon as we find a town, we'll sell them and split the profit. Unfortunately, I didn't have as much luck as you did. Those damn red-eye rotters are swarming all over the wreckage of my ship. I worry it's bad luck leaving behind my own treasures, but I can't get through the bastards. Now there's a good mate. Tough one too, if you're so confident. No complaints, though. Tell you what, if you can get my stuff back, I'll give you a greater share of our profits. 40-60. Or what the hell, 30-70. What do you say? Most of our cargo was lost at sea, and I got my captain's log on the way out. Born in me now is leaving behind my ship's flag and my lucky wheel. Get those, and then maybe we can meet at that campsite. Works for me.
Look how they fall in line when they realize something greater than them is at their doorstep. It will be the same with corruption. You're back just in time. And you rescued a survivor, too. Your legend grows by the hour. This Grace O'Malley has spirit. But she does not like our refuge here. She called me primitive. Me, a former king. Despite her personality, we could use her help against the enemy. I think I found what is causing all the corruption. I scouted the sea caves along the shoreline, and I saw many corrupted. Something evil is stirring in there. I can feel it. As if the crimson clouds hovering over the area weren't a dead giveaway. I've told him for days that's where it was coming from. Yes, I know. I told you I would check it out, and now I have. Some dark energy is definitely coming out of that place. Ah, see now. That is the spirit of a warrior. We will charge into battle together, my friend. It's a shame your pirate companion refuses to join us. The poor girl's just survived a shipwreck. And you ask her to face death for a cause she doesn't even understand? I don't blame her. I suspect you will be wasting your breath, but it is yours to waste. Aye, do not take long, my friend. I will await you at the entrance to the sea caves. But I cannot wait all day. Not when battle beckons. Look, I'm as grateful as can be that you reclaim my flag and all. But don't ask me to go on a fool crusade against those red-eyed demons. I don't need a Medal of Valor. Just a coin for me, thank you very much. Your local friends say there's a town a bit up the road. I'll head there and sell this loot. I'll set your part aside until you get there. For my part, I'll be saving up for a ship to escape this hellish island. Ugh, those two say there's some kind of storm wall out there, but they say a lot of things, and I don't believe a word of it. Besides, Captain Grace O'Malley never met a storm she couldn't navigate. I'll find a way. You can come with me, if you like. Have it your way, hero. I just hope you don't end up as one of those monsters yourself. Don't worry about me burning you on the loot.
You did me a favor, and I'm good for it. As long as you survive, that is. I'll be there. Well, you gave it a try, at least. Your friend is no warrior, but perhaps she is like Urta, smart, and that will help her survive. I've never seen corrupted in such numbers, and I fear they will attack our camp. I need to warn Urta. I am. If something happened to her, I could not bear it. She pokes fun at me sometimes, but I probably deserve it. I was looking forward to spilling corrupted blood with you. It's true. But I'd think now, I must go back to the camp. I can't let you have all the fun without me. But I also can't go when Urta is in danger. Damn it. You can have the glory today, my friend. If you find the source of the evil, destroy it and get the hell out. Urta and I will wait for you at the camp. Godspeed, warrior. Nice tractor. And they shall witness the power manifest.
The true future of the human race. लियो तो ध्यान रहता है एक करी That which is mine.
You assault my followers, and now you disrupt my plans. This is personal. Yet you live! Ah! I knew you had triumphed! See there! The corruption has even receded a bit. What did you find in the sea caves? Some kind of abomination? A corruption rift? I've heard tales of such things. And you shut the bastards down, did you? Ah! You are here a short time, and already vanquishing the corrupted! A feat fit for legend. Let's not get ahead of ourselves. This is a victory, but we must recognize this is not going to be an isolated occurrence. Yes. I have seen this before, more than once. When corrupted come in such numbers, it is a portent for dark times. In the past, an avatar has risen and led the corrupted in a campaign to consume all of Aeternum. No souls are safe from their reach. If you had, it is unlikely you would be here. But make no mistake, an avatar is coming, and we must warn the nearby towns. That would be for the best. There have been some misunderstandings between Elstrom and the town guard in the past. Besides, he likes it here. My friend, your valor is deserving of a reward. Follow the road to town, warn them, and then get a cup of mead at the tavern. You earned it.
Come closer. It is time you know the whole truth. This island has always guarded the promise of paradise. Humanity cast out, deemed unworthy of such blessings. But I did not come here seeking paradise. I came for answers. Redemption after a life of weakness and suffering. And I found a truth that disproved everything I had been taught. I tasted the knowledge forbidden to us at creation, and I saw the vision of humanity's true potential. I knew then, I must correct this ancient injustice and restore the power which is rightfully ours. The heart of the mountain now beats strong with this purpose. After a century of preparation, our campaign has begun. The island's townships already fall before the might of our armies. The only thing I had not foreseen is you. You, who have stolen the gift meant for me. And now your soul will pay the price. For I will not stop until I have seized back the destiny stolen from us and brought true freedom to the world, both old and new. Did you see my court? Huh? The wilds of Aeternum have never been safe, but the roads? Never seen anything like this before. And bring them to the settlement. Oh, gather any herbs or berries you see for yourself as well. They'll fetch a gold or two at the trading post.
हाँ क्या
Welcome to Pridewen, traveler, the greatest kingdom on Aeternum. Well, to be precise, it's a regency currently, but... Have you come from the beach, then? We've had disturbing reports. Not just the self-proclaimed king squatting down there, but something even worse. So it's true, then? God's ears. Why must every day bring such foul tidings? Derelict knights, greedy farmers... Oh, it never ends. And now the corrupted, too. The worst part is that it's all happening on the eve of the most fortuitous occasion Pridewen's known in 400 years. Why, nothing less thrilling than the return of the true heir. Sir Gawain is coming home after centuries to finally claim the throne of High King Artorius. Of course, however, Knight Regent Jin Jay is officially still in charge of our fair town. As a matter of fact, she'll want to hear your account from the beach. Don't feel you have to rush, of course. Welcoming those who've just washed ashore is a Pridewen tradition. Free room and board at the Regent's Rise Inn. I just sent another newcomer from the beach that way. Shady sort. Couldn't take her word for anything, as you might imagine. Sounds like her. A sailor's tongue, all right. Probably someone you shouldn't consort with. Appearances, you know. So again, welcome to Pridewen. Check in at the inn, see the Regent when you can, and join us in celebration when the true heir returns. Jolly good. My new friend right here. Oh, the truffles I lost and then some. Hoo-hoo. I hope it wasn't too hot. Keep that sickle for your troubles. And if you make a habit of harvesting herbs and such, we'll cross paths again. No doubt.
Welcome to the Regent's Rise. Sleep here and wake up feeling like a king. You here to check in? Be my guest. Ooh, literally. Now there's a familiar face. About time you caught up. Here we find ourselves in a little village pulled straight from the Middle Ages. Is it me? Or does nothing on this island make any sense at all?
No doubt. For a place where everyone gets eternal life, you'd think it'd be more calm, dull even. Not saying I'd like that, mind you. One thing that is the same, though, is cold, hard coin. You have it or you don't. Makes all the difference. We're both a little light in the pocket, but I did sell that loot we collected, so there's your share. Never let it be said Grace O'Malley doesn't pay her debts. Well, you got that coin I just gave you, so I'd suggest you get to spending it. Buy yourself a new blade, some new boots, whatever suits your fancy. Ah, yeah, there's a trading post out there. Livelier market than I would have expected. You should check out the trading post in the storage. And then what do you say? Let's meet in the tavern. All right, see you there.
I've met stately noble gentry and shipwrecked men of 20. I've met souls from ancient memory, found in sagas and dusty tomes. I've seen ghosts and fiends and horrors, met knights and bold explorers, as I've wandered every corner of this island we call home. Let's go! Keep it together! Dig in! Woo! Come on now! I've met kings of earthly nations, seen the gods of all creations, tasted wine at every station, from sands to misty moors. But the partings that we weather and the memories we treasure are the souls we've lost forever on Aeternum's forgotten shores. Lively little ditty there. Kinda oversells the place, don't you think? I sure won't be calling this place home. But hey, aren't you popular? Messenger from the Night Regent herself was looking for you. Getting fancy, aren't we? She's keen to have a word with you up at the keep. Word around town says the Night Regent's just a puppet, and some minister Lochner's actually running things. And then this true air business. You'd think that's what drew the crowds. But Barkeep says it's really just people fleeing from trouble at the outlying farms. Sounds like some kind of plague. People turning on their friends and neighbours with cold murder in their eyes. Unlike those red-eyed bastards on the beach, these folks aren't possessed. Seems like they don't have any souls at all. I didn't trust all the shite coming out of that oaf's mouth. Well, maybe there was some truth to it. I'd be more interested to hear what the Night Regent has to say, particularly if there's mention of coin. I'm right here if you need me. Farmers to knights, the miners, no word in days. We need to know what's going on out there, Lochner. The people are simply distracted. Word has spread of the true heir's return. As acting regent, you have served Pride One faithfully, and I'm sure this is unsettling for you. But you can set aside your concerns. When the new king is ready to assume his duties, I will gladly stand down. But not before. Of course. Now, I have preparations to attend to. Ah, you must be the one from the beach. Selpain believes you to be honorable, and I trust his judgment. But I like to hear reports firsthand. We saw signs of corruption by the shore, but we believed it was isolated, and that no one had actually become corrupted. Did you see them yourself? That is not
what I wanted to hear. But I see the sincerity in your eyes. You should know that we normally go to great lengths to make newcomers feel welcome in Pridewind. I'm sorry if I seem impatient just now. With all the excitements for the return of the true heir, I believe we are ignoring signs of grave threats to Pridewind. And news of corrupted adds to the list. However, the greater concern right now is the rush of disappearances. Sworn knights who failed to report in over the last several weeks. Minister Locknir has sent scouts, but they have not returned as of yet. And now I feel they are missing as well. Still, he counsels patience. Locknir believes the return of the royal bloodline will solve all problems. I feel strongly that we cannot afford to wait for Gawain. Oh, I'm sorry. This is poor form on my part, dropping all my troubles on your boots. I would not impose on someone who just arrived. Still, with the remaining nights spread thin, you're probably able to get me answers faster than they can. The mine is not so far away either. That's just it. We don't know. The foreman there, Alia Musa, is a personal friend, and she usually visits once a week. But it's been a month. If you're truly willing, I would ask you to check on Foreman Musa and report back. Oh, and please inform Minister Locklear of your mission, just so he's aware. बोलो बोलो Hunt Showdown में डाउनलोड करो, नया नया वेपन आया मस्त. वो भी खेल लेंगे, टेंशन मत लो. ठीक है, कल खेलते हैं. तो Hunt Showdown. ठीक है. कल नहीं, कल तो ऑफिस पर खेलते रहोगे. 3-4 दिन के बाद अगले संडे को. ठीक है. ठीक है. मत तब ट्राई करता हूँ Hunt Showdown. ठीक है रेता. ठीक है. वो आज का उसको कर दिया क्या? आज वाला उसका करना. कौन सा वाला क्या? अरे थ्रोन का. हाँ क्या? थ्रोन सिंहासन वाला. सिंहासन. थ्रोन एंड लिबर्टी. अच्छा, थ्रोन एंड लिबर्टी. नहीं, आज नहीं खोला मैं उसको. वो सुबह को थोड़ा खोला था. वो उसके कुछ ये कर लिए मैंने, कॉन्ट्रैक्ट्स कर लिए, बस कॉन्ट्रैक्ट करके रख दिया. ठीक है, तो अभी आज इसी को चलाऊंगी कि रात को इसको. Danger abounds, but your fortune will be grown. भाई पूछ रहा हूँ, अगर रात को उसमें आई है तो बताइए. Peace found when the true heir takes the throne. अभी रात को ही उसको देखूंगा. ठीक है. Mountain and dale speak the tale. A warrior of wit and renown. Artorius raised them strong and brave. A true heir for his crown. For the heir, bring flowers fair, that we may build a path of blooms. May they know their people care. It is them we choose. Hey, are you the one I've been hearing about? Yes, you must be. You match the description. People talk around here, you know. They say you've been quite a help, and I was like, well, why haven't they helped me? But then I realized, silly Geardy, it's because you haven't asked. Yes, honey. Honey so delicious it's called devil's honey. I have a special reserve up on Hiraeth Lookout. Collect my honeycombs and I'll give you some to taste.
Ah, yes. The newcomer invited to an audience with the Night Regent. Imagine, if you had arrived a few days later, you might have been welcomed by a king. Yes, Gawain's return will restore Prydwen's glory. The Night Regent has performed well with my council, but she sometimes exceeds her mandate. For now. But she would do well not to concern herself with matters our new king can better adjudicate. Tell me, has she enlisted you in one of her endeavors? Well, aren't we proving our value quickly? I'm sure the king will also be grateful for those who willingly submit to his guidance. It's not my place to countermand the Night Regent's orders, but I would hate to see a prospective resident waste their time. The tavern is open, you know. Love keeps you warm, but so does wool. Come to me if you ever need something stiff. I've made a fair garment for many a fine folk, even my darling Eddie, who isn't back yet. Yes, my foolish heart can't help long for my Eddie. He toiled too hard in the mines. This is the first time he's missed our anniversary. I'd go to the mines myself, but his favorite turkey is roasting away. That'd be lovely. Tell that oaf he has a wife who loves him more than the mines do. And then, gently remind him that it's our anniversary today. And Abi. I'd help you settle in. But I'm the one who needs help right now. We've lost men, lost equipment. I have to build strong defenses for the Regent and her people. But how can I do that without resources? I wish that you could retrieve the miners. Such hard workers, all of them. All equipped with picks that date back to Artorias' reign. Maybe you could retrieve the heirloom picks. I'd be most appreciative.
बोलो मेकअप ब्रेक कब रिलीज होगा? मेकअप ब्रेक तो पता नहीं भैया। बहुत लगता है मजा आता है, साला पता नहीं कब रिलीज होगा। बहुत मजा आता है मेरे को। वो तो अभी टेस्ट रन पे चल रहा था ना, एक छोटा सा मोड निकाले, उसका ना स्टोरी निकाले ना कुछ, स्टोरी में निकलेगा उसका, वो तो सिर्फ छोटा सा एक ये था, ये अरीना टाइप। Wow. हाँ मम्मी क्या हुआ?
Stop this! I'm your friend! After all those years in that hole together, don't make me do this! Stay back! I won't tell you again! Forgive me. Whoa, you! If you thought you were going to the mines, think again. If you have loved ones in there, I don't know what to tell you. Almost everyone's fallen lost and no support from Pridewind in sight. Oh, so now she sends someone. And a stranger who's not even a knight. I sent dispatches informing the region of what happened, and I even said, send every knight available. Doesn't look like that's what's happening. For a while, some of the miners were holding out, fighting back with their picks against the teeth and claws of their now withered friends. At this point, it's probably a lost cause. I can't imagine that any of them are still standing. You're brave, I'll give you that. But we're not talking about a handful of withered. We're talking about the whole damn mine. Look for that stubborn Elias Derrick, and anyone else who's not fallen, and then get them and yourself out of there quickly.
Elias. He was trying to fight back. I'm making a run for it. The mine's lost! Everyone is withered! I'm getting out of here! I thought I'd never get out of here. Thank you. ओ अलसदा बोलो भैया। हेलो। वो स्टोरी जोड़ रहे हैं। किस पे? मैं कहाँ पे स्टोरी जोड़े हैं, कस्टमाइजेशन जोड़े हैं, फुल कस्टमाइजेशन। मैं तो बोला तेरे को बाल की लंबाई तक हम लोग सेट कर सकते हैं। बाल के लंबे होने चाहिए। Finally, a sign of hope. A brave warrior battling their way through the wither. It's beyond a relief to see you up here. Now maybe we can find a way to reclaim the mine. And for that I'm mighty grateful, sure enough. But we can't go without dealing with that infernal relic that caused this disaster. PvP fight भी कर सकते हैं। Player versus player. Shooting range add I करती है। saw it with my own eyes. An ancient tablet unearthed from its rocky tomb. I had a bad feeling about it from the start. स्टोरी को ऐड An ill omen to be sure. खेलने को नहीं पाए थे हम लोग। सिर्फ टेस्टिंग है। No,
I told the crew no टेस्टिंग one में was ही हम to लोग touch स्टोरी the damn खेलेंगे तो thing. कहाँ लगेगी It बाद was में जाके thrumming with some unholy energy. I wanted to get the sage Moira out here to study it. Of course, never got a chance. Next morning, the first of the miners fell to the curse. And then the lost pirates attacked, hunting for that tablet, no doubt. हाँ Yeah, and they're guarding the tablet like it's some kind of treasure. If we don't destroy that damn thing, I fear the curse will spread beyond the mine. You're clearly capable, and I won't complain. I'd go with you, but I'm plumb exhausted from this ordeal. And I'm not much of a fighter. But don't forget, Sage Moira needs to see what started this. Smash the tablet and collect the fragments, and then bring them back. We'll leave together, or not at all. यार उसकी स्टोरी कंप्लीट करो 2 लोग देख रहे हैं
You did it then? Shattered the tablet? God's blood! I'm glad I didn't send you in there to your doom. I'd have felt bad about that. I hate to abandon the mine, but with the tablet gone, maybe these pirates clear out and we can get back to work after time passes. If anyone's left, that is. Haha, Musa. She's a stubborn one, all right. I'll wager she's still waiting at the mine's entrance. I'll go and try to convince her to come back to town. But you, my friend, you must make haste back to Pridevin. Tell the Night Regent what happened here, and give the tablet fragments to Sage Moira. Yeah, let's hope. If anyone will know what in tarnation that thing is, it'll be Sage Moira. Let's hope it's not related to those rumors from the southern farm. I'll go and round up Foreman Musa and the others. Meet me back in town when this is over, and the first round of Gerties is on me.
Aha! There's my honey! I mean, my honeycombs. I wasn't calling you my honey. That would be absurd, but yes, this is fantastic! I'm gonna whip us up some honey cakes right away! You did me a good turn with my devil's honey. I'm thinking I might have another favor to ask, if you've got the time. Seeing as how everyone is talking about battening down the hatches here to protect against the lost, I think we need to stock up on spirits. And I think I might know a spot to get our hands on some perfectly aged wine from the old world. Bess said sure. Grab as many jars of wine as you can find there. We'll celebrate a little while we still have the time. Who knows what'll happen tomorrow? Oh dear, he's not with you. That can only mean... Blast that dumb cop! I told him to stay with me today. But no, he had to go to the mines and pick at another rock. I'm sorry too. There will never be another Eddie. I remember the first time he handed me his coat in the rain. Our first... Thank you for bringing me the news. Even if it wasn't what I expected. Eight, 9, 10. The miner's heirloom picks are all here. All accounted for and in good condition. This will be a big aid to building our defenses. How can I thank you for this? You have my friendship, Rajal Sadak, and my time. And an odd job if you ever have need of one. We are always on the lookout for honest, hard-working people, and you strike me as being one. Let me give you a tip, Rajal Sadak. No one cares where you came from. We care about what you can do. The Regent made me her master builder after she saw my work. Though, she probably regrets that now. Well, I've run into some supply troubles. I was expecting a shipment of stone, timber, and leather this week. Nothing's turned up yet. I fear the poor souls I found to help me
may have turned into the lost. Oh? Would you? That'd be most excellent. You'd need to cut trees to gather wood and crush rocks to extract stone. There's a lot to teach you. But you seem up to the task. The true heir sought to save us once, and now the answer they'll bring. The lost will learn, be forever turned. They'll know them as our one true king.
You return. Excellent. Minister Lockney said I sent you on a fool's errand. But I can see from your expression you bring dark tidings. What did Foreman Musa say? Tell me the miners are all right. I can't tell you how disappointed I am to hear that. I have failed in my duty to protect the people of Pridewind. The warnings were there, and I allowed them to be ignored. From this moment forward, I will take every precaution to ensure the people of Pridewind are safe, inside and outside these walls. We will start by discovering how this disaster at the mine began. Surely someone saw something. Such relics are better left in the earth. The ruins of Aeternum hold dangerous secrets that are best left uncovered. We'll need to have Sage Moira study this tablet for answers. If it can even be recovered, I suppose. Excellent. Then please do me one additional favor and bring them to Sage Moira. She knows this island and its secrets far better than I do. But before you go, what of Foreman Musa? I fear to ask after my dear friend. Is she all right? Did she try to send for help? But I received no dispatches at all. This makes no sense. Unless... well... perhaps Minister Lockney will be able to surmise how this occurred. I'm sorry to impose further, but after seeing Sage Moira, could you look for the minister in the town square? Tell him I require his counsel. Urgently. I've just seen Elias and learned of the tragedy at the mine. Are you the one who recovered the fragments of this tablet they stumbled onto? Very interesting. Elias said they unearthed this tablet, but it has signs of extensive weathering. Yes. It has clearly been exposed to the elements. I will have to study these fragments more closely. In the meantime, you are new to Pridewind, are you not? Quite a moment to arrive. Do you know our history? On the precipice of Sir Gawain's return to claim the throne, you should learn the significance of this event. Let me tell you the full story. King Artorius arrived on Aeternum 700 years ago to discover a people scattered and divided. Promising order, he united southern Aeternum for the first time since the era of the Ancients. The king's rule was built upon the armor-clad shoulders of his sworn knights. Courageous Sir Gawain, fierce Sir Lancelot, and the loyal Sir Galahad. Their
was tested when hordes of corrupted attacked from the north, guided by none other than the king's fallen advisor, the wizard Mirden. In the wake of the conflict, King Artorias was gone. Fate unknown as the kingdom crumbled. Lancelot left seeking vengeance, and Galahad to create a new life. But Sir Gawain was heir to the throne. He departed, seeking only divine blessing for his rule. Prydwen was in a dire state, ravaged by war, its people demoralized. It was Minister Lochner who held the town together, safeguarding the throne for Gawain's return. But Surgeon Jay of Ebonscale Reach captured the hearts of the people. After so many dark years, she emerged as a beacon of hope and was appointed Knight Regent. Now the minister informs us he spotted Sir Gawain's sails on the horizon. And we prepare for the true heir to finally come home and claim his throne. Now perhaps you understand how momentous Gawain's return really is. And why it's so worrisome to hear this news from the mine, and from the farms. Though Minister Lochner has been keeping it quiet to avoid a panic, we've had quite a few refugees claiming their farms are overrun with lost. But Lochner assures me it's under control. If you have further questions, ask him. I must get to studying these fragments. Let's hope they yield answers. After so many years without our true leader, it's natural to have doubts. But I assure you the hour draws near. The bloodline of Artorias will soon sit again upon the throne. What we have endured here pales in comparison with what challenges Gawain has faced in his long journey home. But he has persevered for you, the people of Prydwen. We must ask ourselves, how will we show, nay prove, to our new king that we are as devoted to him as he is to us? When the hour arrives, I know he will find his subjects have remained true. And we will honor him as we once honored Artorias himself! And pledge our undying loyalty. Ah, our brave newcomer returns. I understand the Knight Regent dispatched you to the mines. A lot to ask of a guest, but it's her prerogative. Do tell, though. I hope the situation there wasn't as dire as it sounded. She said that, did she? Well, yes, I do recall receiving at least one dispatch. But her demands were absolutely out of the question. The foreman wanted us to send all our knights to help defend the mines, but that was, of course, impossible. With all the preparations for the return of the true heir, we simply can't dispatch our knights everywhere they're needed. I was preparing to send a few knights, but then I was told that you had been given the task.
Oh, by all means, tell her I will come as soon as I finish my vital work on behalf of the true heir, which was proceeding apace before I was interrupted. Tell her it won't be long. And thank you for your service to Pride One. You return, but without Minister Lochner. I assume he claimed he was too busy with his preparation. Perhaps it's just as well. As Knight Regent, it may be best if I handle matters personally going forward. While you were away, Foreman Musa visited and related the whole story from the mines. She says the day after the mysterious tablet appeared, lost pirates attacked the mines, seemingly out of nowhere. These pirates could only have come from the Beseth shore to the north. There was a den of brigands there, and now they are apparently lost. This seems to be an alarming trend, and we must find the source of it. I have already dispatched Sir Payne to the north, which is my duty as Knight Regent. Lochner will not be pleased, but perhaps he will now deign to pay me a visit. You are eager and courageous, and it is most welcome. My hope is that you and Sir Payne can deter the pirates from further incursions, and discover what drives them. May fortune go with you both.
ओ है लगी। हेलो थ्रोन एंड लिबर्टी हटा दूं? नहीं नहीं रखा रहे, चलेंगे रखे उसको। रखे ठीक। फिर मैं वो क्या हंट शोडाउन डाउनलोड कर रहा हूँ, खेलना होगा तो बताइएगा, ठीक है? माना था। इसमें फार्मिंग करना थोड़ा अजीब लगता है, इसमें मटेरियल फार्मिंग ज्यादा अजीब लगती है, क्या लगता है? यही बकवास है, मतलब मॉन्स्टर से ड्रॉप करो, फाइट करते करते ड्रॉप करा दो, ज्यादा सही है। ग्लोबल रिसोर्सेज बहुत बेकार लगते हैं। तब शायद अब क्राफ्ट कर सकते हैं तो वो पता कुछ है। ये विलेज के सामने आप फार्मिंग शायद कर रहे हैं, क्यों अलग है? हाँ बिगिनर्स विलेज के सामने जो रास्ता जाता है उसको फार्मिंग कर रहे हो। लेकिन इसकी क्वालिटी अच्छी लग रही है उससे क्यों आने में। हाँ ग्राफिक वाइज, ग्राफिक की बात की जाए तो इसका ग्राफिक मेंटेनेंस उससे अच्छा है, पर उसका स्पेस वैल्यू भी कम है, इसका स्पेस हाई रिक्वायरमेंट है क्यों आने में। हाँ कंपैरिजन में बात कर रहे हैं, इसमें ग्रीनरी बहुत हाई है, बहुत डेंसली ग्राफिक रिक्वायरमेंट है इसकी। उसमें जो है बहुत से एरिया खाली रखे हैं उन्होंने ताकि जो है लो ग्राफिक रिक्वायरमेंट हो क्यों आइलैंड में। हाँ तो गेम में मतलब बहुत दूर दूर तक बहुत सी चीज़ें खाली रखी हैं, प्लेन मैदान से रखी हैं फिर ताकि जो है ज़्यादा कंजस्टेड ग्राफिक रिक्वायरमेंट। और इसमें हर थोड़ी देर पे इतनी हरियाली है, हाई डिमांडिंग ग्राफिक कार्ड है इसमें। इसको फिल्म कैसा लग रहा है? अभी तो ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, ओके ठीक ठाक है, मतलब ठीक ठाक है। और फाइट कैसी थी? फाइट कैसी कर रही है? फाइट भी ठीक ठाक है, मजा आ रहा? ठीक ठाक बोलूँगा, इतना तो बढ़िया है नहीं, तो ठीक ठाक है। पीवीपी कंटेंट? पीवीपी कंटेंट तो अभी मैंने किया नहीं, दूर है वो। आपको क्या लगता है इसके कितने दिनों में लेवल अप हो पाएगा? पता नहीं, मैं थोड़ी देर के लिए बीच बीच में खेलूंगा, हर टाइम नहीं खेलूंगा। तो भी इसको खेल रहा है पहले पता नहीं मेरे को, नहीं खेलोगे तो बताइएगा, मैं अपना आईडी उसको देता हूँ तो उसमें खेल लेगा जैसा लगेगा उसको। उसके पास है ये गेम है? हाँ चलिए तो है तो बढ़िया है, तो चल वैसे इसमें वो क्या कहते हैं उसको, ये अपने आप को मतलब आपको जो है इसमें मजा आए इस करके कुछ है मेरे पास। कोई नहीं कोई ठीक है, चलिए ठीक है तब माइक ऑन कर रहा हूँ, आराम से फार्मिंग करो तो थोड़ा दिन
ये लो नाम लिया हाजिर है मतलब मैं हेलो। बोल ही रहा था मैं तेरे ही नाम ही ले रहा था मैं 2-3 बार न्यू वर्ल्ड खेल रहे हो दोनों? ये खेल रहा सर क्या न्यू वर्ल्ड क्या न्यू वर्ल्ड नया न्यू दुनिया वर्ल्ड खेल रहे हो दोनों? कहाँ तक कौन सा मैं लेवल पहुँच गए? कौन सा सर्वर ज्वाइन किए हो बताओ? मैं नहीं खेल रहा चलो सिर्फ टर्टल ये खेल खेल हाँ हाँ और मैं इनका लाइव देख रहा हूँ सो लाइव तो है नहीं है। अच्छा यूट्यूब हाय भाई ये तो कह दो क्या मोबाइल चला के तो करेंगे फार्मिंग कर रहे हैं टहल रहे हैं केले के पत्ते काट रहे हैं तो फिर मछली लपेट करके मसाला लगा कर पीते हैं क्या लगता है एच सर्वर नहीं है। ओह सिडनी सर्वर है। Great! ऑस्ट्रेलियन You brought सर्वर है उससे exactly what I needed. The right type and the right यूरोप amount. तो वही है क्या? Were you always this resourceful? यूरोप के कौन सी सर्वर पे ज्वाइन किया था? You're a good person, Rajal सोबरा Sadak. में कुछ You're नहीं going जा to रहा do है very well here on Aeternum. ए टर्टल I hope to see more of you. यूरोप के सर्वर पे कौन से ज्वाइन किया? रुक जा Did you देखना make पड़ेगा friends मेरे here? को You टॉप seem राइट like पे या someone a टॉप person लेफ्ट would में be इन्वेंटरी में शो lucky होता to call a तो ये friend. Back home in है। Syria, आया है we always खुद repaired देख it. लेता सो के आया You've है helped सोने me जा words रहा है to live by, मैं Rajal सो के आया हूँ Sadak. अभी। You could be night मैं इसको मैसेज material. किया था जब And I want कि to see मैं you कुछ make it काम through है a थोड़ी देर few में आ more रहा हूँ summers at कर रहा least. था थोड़ी Has देर तक anyone फिर मैं taught सो you गया। how to make a इस sword? तरह कुछ सोता ना तो मेरे से I खेला नहीं suppose जाता। I must do बैठे everything बैठे around करता here. I'm sure that once I teach you to make a sword, you'll be able to supply armories. You have that industrious look about you. ड्रोन लिबर्टी खेल ला। मैं ओपन भाई कर रहा मैं हूँ तो अभी सोच रहा थर्ड अकाउंट भी बना लूँ एक। ये मेरे कहाँ को से देखते हैं मेरा सर्वर कौन सा है? लाइव इन्वेंटरी ओपन यूट्यूब देखूँ। हाँ इन्वेंटरी ओपन यूट्यूब कर खोल रहा था यार। मुझे कैसे याद होगा मुझे बट इन्वेंटरी में शो जाता था लेफ्ट साइड टॉप पे। पिंग वाला भी ऑप्शन ऑन कर सकता है तो पिंग भी शो जाती है या फिर तू सेकंड
कहाँ पर दिखाता कहाँ पर है ये? Do you know what happened with Alia's messages? The regent would never have taken that much time to send help. The first time I came here, she called me to court, just to make me feel welcome. Who doesn't like her? She used to visit the mines weekly before people started turning into the lost. She probably spends entire nights trying to figure out why this is happening. It's like, oh yes, the mysteries of a land are in its dirt. How does Azoth travel? What remains of the people who lived here once? I'll solve the mysteries of this island one mineral vein at a time. It's a most fascinating conundrum. मैं लाइव देख रहा हूँ तेरा, ठीक है? एस्केप दबा, YouTube लाइव देख रहा हूँ मैं तेरा, एस्केप दबा। दबाया। तेरा डिले चल रहा है YouTube पे बहुत। सेटिंग में जा, सेटिंग में। तो डिस्कॉर्ड पे करते यार, उस पे तो बहुत 1 मिनट का डिले चल रहा है ऑलमोस्ट। क्या करना है? स्ट्रीम लोड हो रहा है, डिस्कॉर्ड वाला कुछ नहीं हो रहा, दिख नहीं रही। स्ट्रीम दोबारा चालू करना पड़ा, ये शो नहीं होता। अब डिस्कॉर्ड पे लाइव स्ट्रीम चालू हुआ है। सेटिंग्स खोल।
गेम सेटिंग्स, गेम के नीचे सेटिंग्स लिखा है ना, टॉरस लिखा तो है, देख वर्ल्ड राइट साइड पे टॉरस, बॉटम राइट पे दिख रहा है, टॉरस है तेरे सर्वर, पता चल गया मुझे, बंद कर ले। मैं वही बोला ना, ये सेटिंग खोलते ही सारी कहीं ना कहीं शो कर रहा था, मुझे याद नहीं है exactly। That's a fine-looking sword, Rajal Sadak. It would almost rival the swords in Surrey. I'm not surprised. It's what I've come to expect from you. Drop by at the tavern any time you want to drink, all right? I'll tell you stories of the High King Artorias you wouldn't believe.
A lot of people have been telling me great... A lot of people have been telling me great things about you. I hope you know. You'll have many friends here, if you choose to stay. Allah. Por itu karena ya seperti लाइट का इशू हो रहा है मेरा। वो यूपीएस इन्वर्टर लाइक चलता तो है पर ट्रिप मार जाता है। पुराना हो गया ना, बैटरियाँ दो के चालू हो जाता, बट वही दो के चालू होता तो वही है, रीस्टार्ट होता है तो इंटरनेट भी रीस्टार्ट होता है तो फिर वेट करना पड़ता है नेट चालू होने का, तो सिर्फ चालू होता था। बार बार अभी लाइट आ जा रही है। बाय द वे फ्रैगमेंट का मुझे प्ले टेस्ट मिला हुआ, मैंने देखा ही नहीं, आज देखा मैंने क्योंकि अकाउंट चेंज किया ना मैंने आज यूएस वालों को। चालू कर रहा डी वर्ल्ड अप करना और कर रहा। गलती से तू वो आने वाले सर्वर में तो नहीं चालू कर लिया? गलती से तू पुराने वाले सर्वर में नहीं चालू कर लिया? बताओ क्या सिस्टम चल रहा है न्यू वर्ल्ड में। एक है पुराने सर्वर जो हैं उनमें से कुछ सर्वर ऑल ऐसे एज इट इज हैं, उनमें तुम्हारा पुराना कैरेक्टर है सब कुछ होगा, उनमें तू अभी भी नया कैरेक्टर बना के जा सकता है। और कुछ होंगे एक ब्रांड न्यू सर्वर, जैसे उसके अर्ली एक्सेस सर्वर एंड नए सर्वर थे ना,
वैसे ही ट्रोनल लिबर्टी की, वैसे ही इसके मान ले जो 2 साल पुराने सर्वर वो हैं, ठीक है, तो साथ में एकदम ब्रांड न्यू सर्वर जिसमें सारे नए रेट्स हैं, ये डिफरेंस है। तो वो तो देखना पड़ेगा, गलत सर्वर पे चालू कर लिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी, फिर वो कोई भी अपनी डंजन में मैच नहीं मिलेगी। जैसे तभी बहुत मुश्किल था, सोच नहीं सकता, बहुत मुश्किल था डेवलप करना है। जैसे उसमें मान ले ना 20 वाला डंजन है, मान ले 2-2 3-3 दिन तक को 20 वाला डंजन ही कंप्लीट करने में थ्रोन, तो कोई नए प्लेयर है ही और कोई 20 वाला डंजन करना ही नहीं, तो 20-20 दिन लग जाएगा, 20-20 दिन के 2-2 3-3 दिन वेट करना लग जाएगा, वो बस चालू करके तू साइड फार्म नहीं करता है। Waiting for a program to respond. ये एरर तो नहीं होगा। क्या चल रहा है इसका? हाँ। तो शेडर इंस्टॉल हो गया, बहुत देर लेते हैं कि बहुत इजीली हो गया। इवेंट आ रहा है थ्रोन एंड लिबर्टी का थोड़े दिनों में, कल आना शायद, नहीं या परसों। लोल ये थंडर वेपन्स देख रहा है, लाइव कर। अब डिस्कॉर्ड पे लाइव करना पड़ेगा, वहां पे पागल हो जाऊंगा, तो डिले है यूट्यूब पे। नहीं है, अब हुआ चालू। कौन सा गॉन्टलेट दिखाओ मुझे? अबे वो हीलिंग वाला है, अरे वो डीपीएस वाला गॉन्टलेट कह रहा है। अरे वो वही है, जैसे वॉन्ड नहीं होती वैसा सा है, इसमें स्टाफ हीलिंग करता है। जैसे उसमें वॉन्ड हीलिंग करती है ना, इसमें स्टाफ हीलिंग करता है, एंड गॉन्टलेट स्टाफ का मतलब हीलर का वो सपोर्ट होता है। ये डीबफ लगाता है, जैसे वॉन्ड के उसके अंदर वॉन्ड के अंदर ही सारे ऑप्शन होते हैं ना, डीबफ लगाना, हील करना, इसमें स्टाफ में हीलिंग के ऑप्शन होंगे सारे, एंड डीबफ वगैरह लगाना उसमें होगा गॉन्टलेट में, वॉइड गॉन्टलेट तेरी हीलिंग भी बूस्ट कर देता है। एंड स्टैट वाइज फिर तेरा लोडिंग पे अटका हुआ है भाई स्ट्रीम, तेरा नेट का इशू आ रहा है शायद, या मेरे नेट का इशू। 2 सेकंड आया, दरवाजा खोल के।
भाई इसमें इसमें मैं पता है कोई वो खरीदा था, इसमें मैं पता नहीं बैटल पास खरीदा था, पता नहीं क्या खरीदा था, और खरीदने के 2 दिन बाद मैंने गेम खेलनी छोड़ दी थी न्यू वर्ल्ड। तो मैं बीमार हो गया था बहुत, तो मैं खेल ही नहीं पाया था, फिर मैंने चालू नहीं करी। क्रिएट अ न्यू कैरेक्टर, यू सेंट्रल पे ही है ना? हाँ यू सेंट्रल पे ही है। तो यू सेंट्रल ये टॉरस, पॉपुलेशन मीडियम। हाउ डू आई नो सर्वर और करेक्ट फ्रॉम फ्रेश फॉर ट्रांसफर टू डिस्कॉर्ड? अच्छा ठीक है, तू सही सर्वर में गया। ये नयासा आरू एंड क्रोनोस पुराने हैं एंड आई वाज ऑन। अच्छा वर्ल्ड सिलेक्ट कर सकता हूँ मैं। वर्ल्ड ये नहीं कर सकता। ओके फाइन, क्रिएट अ कैरेक्टर, न्यू कैरेक्टर करना है, विल प्रोसीड क्रिएटिंग अ न्यू। अब पता है क्यों नहीं करना चाहता भाई, ये भी बहुत ग्राइंड है। मैं कर चुका हूँ ग्राइंड एंड मुझे पता है इसका एंड गेम मजेदार नहीं, बोरिंग है बहुत। चलो मैं कैरेक्टर क्रिएट करके आ। कितना लेवल कर लिया तू? इन्होंने टाइप बना दिया और तुम चेंज नहीं कर सकते क्या? आगे जाके कर सकते हो ऐसा नहीं। मेरे को इसका वीडियो भी देखना पड़ेगा, करंट मेटा क्या है। हीलर में तो वही होगा, वॉइड वंटलेट एंड स्टार, वो तो मुझे पता ही है। राइट क्लिक दबाना होता है शायद, यहाँ से दिखाएंगे। एबिलिटी दबा के राइट क्लिक दबाना है, ऐसे कुछ होता है। तेरा लाइव ना स्ट्रीम नहीं हो रहा, तेरा नेट खराब है शायद। अरे मे भी शायद बैंडविड्थ का मेरा इशू हो सकता है। पिंग तो पूरा बराबर दिखा रहा है 22 मैं यार गेम फ्रीज कर गया।
भैया बता तेरा लाइव अबे तू देख लेना, सेटिंग में देख ले। रुक जा, मैं ही देख लूँ। एक यूट्यूब पे देख लो ना। तो एक मिनट बाद अबे उसमें ऑप्शन होता है यार, कोई बटन दबाओ तो वो अपने पे करता है। अच्छा, लेफ्ट कंट्रोल दबा के फिर कोई एबिलिटी यूज करेगा तो तेरे पे हो जाएगी। नहीं, शिफ्ट दबा के। अच्छा, शिफ्ट दबा के हीलिंग एबिलिटी यूज कर, तेरे पे यूज हो जाएगी। और दो बाकी मेरा गेम फ्रीज कर गया, मैं नहीं कर पा रहा, फिर दोबारा ट्राई करता हूँ। हेलो चूतिया पा है लिखकर, बहुत घटिया गेम है ये तो। जानते हैं लिखा, सुनिए, मैं सिर्फ 2 बार हीलर बन के खेला ड्यूक मैच में ना, मेरे को दो बार भोसडी वाले ने ग्रेट शॉट दिया। तो मैंने इसके पहले पता नहीं कितनी बार टैंक बन के खेला, एक बार भी भोसडी वाले ने मुझे एक ग्रेट शॉट नहीं। समझ रहे मतलब, इफ यू आर ए हीलर यू विल गेट द टैंक, if you are a DPS forget, I will only provide you healing elements. Nice strategy. समझ रहे? अगर आपको DPS चाहिए आप हीलर बन के, समझ रहे लेता, मैं हीलर बन के खेला 2 बार, मुझे 2 बार दोनों वही शॉट मिले जिसके लिए मैं रो रहा था अभी तक। अच्छा, वो कह रहा है। अबे ये होता है, जानबूझ के करते हैं। समझ रहा मतलब
मतलब हमने गेम करेक्ट कर लिया, समझ रहा है लिखा? आपको डीपीएस आइटम चाहिए, आप टैंक बन के खेलो। आपको टैंक आइटम चाहिए, आप हीलर बन के खेलो। आपको डीपीएस चाहिए, Good of you फिर to भी आप join हीलर us, बन के my खेलो। सब valiant कुछ आपको friend. दूसरी चीजों का I देगा, heard पर about आपको your हीलिंग का heroics नहीं at the mine. देगा। You definitely टैंक have बन के the खेलो, makings आपको of हीलर it. प्रोवाइड For कराएगा। now, समझ we रहे are हो ना simply लिखा? grateful to have your support. बता वो भाई होती है बता। पटी। Not quite a तेरा ना full टाइमिंग contingent वैसा here, सारा I'm है, afraid. अगर तू जैसे होता ना हर आइटम का पिटी है, एक मैक्स अमाउंट है कि तेरे को कोई भी आइटम मिल सकती है, उसके बाद तेरे को जो आइटम नहीं मिल रही Before वही you do मिलेगी, समझ रहा anything है? else, you must तो build तेरा yourself a टाइमिंग ऐसा रहा campsite. या It's जो the भी wise ऐसा हुआ है move when we're this कि far जब from तूने Prideland. उससे There's शिफ्ट a किया हीलर पे, splendid तेरे spot को उसी वक्त मिल nearby. गई। Set your tent, होता है relax a ऐसा। bit if you like. We'll be here. तो उसके पहले क्यों नहीं हुआ? मतलब पिटी थोड़ा पहले भी आ वही है ना, सकती थी ना, तो हीलर को देख के ऐसी लक दया पे क्यों आ डिपेंड गई? करता है, ये तो रैंडमनेस है ना टोटली। ये रैंडमनेस नहीं है, उन्होंने सोचा कि अब ये बंदा डीपीएस नहीं खेलेगा। मैंने जानते हो क्या किया? मैंने सब कुछ अपना ब्लू पे कर दिया, पिंक सब कुछ हटा दिया, और सब कुछ मेरा ब्लू बिल्ट है। ब्लू बिल्ट तीनों का अब है मेरे पास, और खतरनाक बिल्ट है हीलर तीनों बन का। जाऊँ क्या दोबारा? सारे ट्रेड हीलर बहुत मुश्किल है यार। भाई मुश्किल ज्यादा नहीं है, क्योंकि अब ज्यादा दिक्कत नहीं होती है, क्योंकि अब मैं लोगों को इसकी पता बात चल कर गया रहा ना हूँ, कि क्या करना होता है। मैं ये न्यू वर्ल्ड की बात न्यू कर रहा वर्ल्ड हूँ। नहीं, एक चीज मैंने देखा पुप्पू, अभी जब मैं खेल रहा था ना, मुझे ज्यादा कुछ करना नहीं पड़ रहा था। लोगों को सबको पता है कि लाइफ पूल जो है टैंक्स के लिए मिलेगी, सेम जगह पे मिलेगी, जब सारी की सारी इकट्ठा होंगे, सबके सब इकट्ठा हो जा रहे थे सबको। मतलब अब एलेंड्रा मतलब खेलने में इसको बोल रहा हूँ, एमी का बात करता है। ये रही आईसी बोल वेव, तेरा भी यहाँ पे बिल्ड देखता था मैं सारा दिन बैठ के, फिर पढ़ा रहता था मैं। लगता मेरे को ज्यादा ही पेटी करते हैं इसमें। इस गेम में कुछ तो लोचा है या इसका। नहीं, इस गेम में कुछ ज्यादा है। वारफ्रेम हम लोग खेलते तो उतना नहीं होता था। वारफ्रेम में आपको कंफर्म होता था कि आप 6 सेट खेलेंगे, 6 सेट में आपको मिल जाएगी। मतलब उसमें सेट है, कितनी बार खेलोगे मिल जाएगा। हो सकता है पहली बार में मिल जाए तो छठी बार में मिल जाए, पर मिल जाएगा। तो उसमें लोगों को पता होता है कि कितनी बार में मिल जाता है। ये भी हो सकता है कि गेम में उसमें तुम लोगों ने बता रखा है कि 6 बार में मिलती है, इसमें ये कितनी बार में मिलती है। वो गेम कई सालों से भी तो है, तो लोग उसके क्रैक कर रखे कितनी बार में मिल जाता है, कितनी बार में मिल जाता है। ये भी हो सकता है क्यों एलेक्सा? मेरे पास है एलेक्सा, मैं डीपीएस का एक बिल्ट बना सकता हूँ। मैं कॉम्बो है मेरे पास, क्रॉसबो एंड ग्रेट स्वॉर्ड बना दूँ क्या? मेरे पास सारे आइटम है उस बिल्ट के, और सारे ट्रेड अपग्रेडेड हो रखे हैं, पर ब्लू पे, पिंक नहीं। इतना साला अब सब कुछ दे दिया इसने, इतना कुछ इकट्ठा किया था मैंने। मेरा माइक म्यूटेड है और मैं बोले जा रहा हूँ इससे को कि क्रॉस ग्रेड स्वॉर्ड का कोई कॉम्बिनेशन नहीं है, बहुत टट्टी कॉम्बो है। Ah, you're back. क्रॉसबोर्ड ग्रेट स्वॉर्ड I'm at a bit ठीक of है, a नहीं loss करूँगा। here. दूसरा कोई A few बढ़िया months होता ago, तो this वो एंड barren स्टाफ beach कैसी है, had nothing वो तो but मैं a चला रहा हूँ, बढ़िया नहीं यहाँ चला से रहा ग्रेट हूँ। स्वॉर्ड डैगर कर ले, pirates and some लॉन्गबो indeed. डैगर कर ले, पीवीपी Perhaps we फोकस should बता रहा pursue a हूँ more तुझे। honorable पूरी हाँ, इंडियन अब सारी बताओ। गेम पीवीपी है बेच दिए इन दी एंड। हाँ बताओ। तो लॉन्गबो डैगर, स्टाफ डैगर, Ah, ग्रेट you're स्वॉर्ड back. डैगर कर ले, ये I'm तीन out. What ग्रेट appears स्वॉर्ड to be है। a war camp.
फिर उसके बाद एकदम टोटल ग्लास कैनन, indeed. मतलब तेरी It's gonna take an सर्वाइवबिलिटी army कम to होगी drive बहुत, them out, and we currently lack उसमें an वो army. चले जाएगा तेरा Perhaps we should pursue a more honorable approach to स्टाफ एंड resolving वो this चले जाएगा conflict. You two लॉन्गबो stay एंड here and defend our डैगर एंड क्रॉसबो हो जाएगा, ये दोनों ग्लास कैनन। और फिर अगर टैंकी साइड पे जाना है, टैंकी साइड पे हो जाएगा when I स्वॉर्ड am एंड शील्ड, victorious. ग्रेट स्वॉर्ड। स्वॉर्ड एंड शील्ड ग्रेट स्वॉर्ड, भाई वो हाँ तो टैंक बिल्ट है। हाँ, वही तो कह रहा हूँ ना, अगर पीवीपी में सेक्शंस होते हैं ना, अगर पीवीपी टैंक बनना है तो ये बनेगा, पीवीपी तूने वो बनना है तो वो बनेगा, तू पीवीपी ये बनना है तो ये बनेगा। डैमेज डीलर्स में ये 4 ही हैं क्लास में, डैगर के साथ कोई भी कॉम्बो चला ले, या फिर टाइगर के स्टाफ साथ एंड लॉन्गबो। टाइगर ग्रेट स्वॉर्ड। लॉन्गबो एंड क्रॉसबो भी चलती है, बट वो थोड़ी डिफिकल्ट है, थंडर से कॉम्बो नहीं हो रहा था। नहीं नहीं लॉन्गबो क्रॉसबो मतलब भी स्टाफ एंड लॉन्गबो जैसा ही डैमेज है, Oh, बट स्टाफ एंड well, लॉन्गबो yes. है कि इनिशियल Good बर्स्ट point. डैमेज I दिया तूने, फिर सब पे suppose कूल डाउन our लग जाएगा, तेरे options को would वेट be करना more पड़ता है। limited then. जो मेन डैमेज स्टैकिंग एबिलिटीज है उन सब पे कूल डाउन लग जाएगा, बट क्रॉसबो एंड लॉन्गबो पे है कि तू कंसिस्टेंट डैमेज दे सकता है, हाई डीपीएस, और तेरा वो जो हाई डीपीएस है ना वो मेंटेन्ड रहता है, बट उसके कारण क्रॉसबो एंड लॉन्गबो डिफिकल्ट है देन स्टाफ एंड लॉन्गबो। एंड हीलर के लिए तो एक मेन ही है, एक ही है बस बिल्ड पीवीपी के They've लिए, been वो unloading है cargo लॉन्गबो using एंड a smaller बॉन्ड। rowboat. अगर If you तू can हाइब्रिड destroy चलाना their चाहता है तो rowboats and स्टाफ all the एंड cargo बॉन्ड they've बस। dropped, that would slow them टीयर 1 down. में तो वही है, I'll stay अगर and तूने keep an eye out for their 1v1 में leader. देखना है तो क्रॉसबो डैगर 1v1 में सबसे आगे है, ठीक है, टीयर 1 में। फिर उसके बाद इसी में आएगा स्टाफ एंड लॉन्गबो एंड टीयर 1 के नीचे जस्ट, मैं ये नहीं बोलूँगा बी टीयर आई, एस टीयर मानते हैं ना, अगर एसएस टीयर मान ले क्रॉसबो डैगर है, ठीक है, क्योंकि उसका जो डैमेज आउटपुट है कोई मैच नहीं कर सकता गेम में 1v1 में। सेकंड पे आ जाएगा स्टाफ एंड लॉन्गबो एंड क्रॉसबो, सेकंड नंबर पे यहाँ जाएंगी, एंड लॉन्गबो एंड क्रॉसबो थोड़ा सा आगे है उससे, स्टाफ एंड लॉन्गबो से, बट वही खास फर्क नहीं है। ये है कि तू वही कंसिस्टेंट डैमेज दे सकता है, तू एक बंदे को मारा तो दूसरे को मार ले सीधा ही, उससे लड़ने लग जाएगा तो तीसरे को लड़ने लग जाएगा, बट स्टाफ में क्या है कि एक बंदे को फटाक से मार के तेरे को कूल डाउन का वेट करना पड़ेगा, यही काम है। 1 मिनट में आता। आए मम्मी, आ गए। टीपीएस वो था हैचेट एंड स्पीयर, सबसे ज़्यादा था जो पॉपुलर उस टाइम पे। मुझे ढूंढना पड़ेगा टीयर लिस्ट क्या है। इस बार क्या है, रेपियर बहुत अच्छी है, रेपियर के साथ बस क्या यूज़ कर रहे हैं लोग, ब्लंडर बस अपेरेंटली, रेपियर एंड ब्लंडर बस अपेरेंटली बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन है पीवीपी के लिए। डिस्कॉर्ड का एक बॉट है, तू थंडर ऐड कर सकता है, वो जब भी इन गेम बारिश होगी ना तेरे सर्वर पे तेरे को मैसेज डाल दिया करेगा डिस्कॉर्ड में अलर्ट, सैंक्टम इंतजार करने के लिए। सेटअप हो जाओ, ज्यादा बोल रहे हो, चुपचाप रहो, बहुत बोल रहे हो। ये बात मेरे फटी हुई आवाज, सेटअप हो जा, सेटअप। खेल रहे गांडू, ए साला इसके बहुत थोड़ी इधर भी है, मैंने ध्यान ही नहीं दिया। क्या हो गया भाई, इतना दिन बाद दिख रहा है। अरे मैं कहाँ गायब हुआ, मैं तो आया भी था, कल भी आया था। कहाँ, कल तो हम भी आए थे। काला मैं आया था कल, कल आया था, कल ही आया था। हम तो नहीं देखे भाई, कल देखो। पता नहीं कितने बजे आया था, दोपहर में आया था सर। मैं रात को आया। नहीं रात को तो नहीं आता मैं, कभी कभी रह लिए।
अभी कितने बजे? हम तो माइक टेस्ट करने आए थे, मुझे सुबह से कोई मिल ही नहीं रहा। हाँ माइक मंगाया ना मैं। हाँ वो तो सॉल्व हो गया, अभी स्टार्ट हो रहा भाई, नहीं तो बहुत टाइम लगा था कोरोना में। हुआ क्या था माइक में थोड़ी हुआ था। तो क्या हुआ? अरे वो मदरबोर्ड का ये मतलब रैम का फ्रिक्वेंसी बढ़ गया था, तो सेटिंग चेंज हो गया था। नहीं सेटिंग चेंज हो गया था, तो बार बार वो सिक्योर बूट कर रहा था, सब कुछ चेक करके बहुत टाइम लग रहा था उसको, वही ऑफ करने नहीं आता था मेरे को, वही ठंडर पे वीडियो भेजा था उसको देख के ऑफ। नोबड़े की ये ठीक करवाया भाई साहब, किसने लग गया नोबड़ा? अरे मेरे को सब समझ आया था, बट मेरे को समझ नहीं आ रहा था कि वो सिक्योर वाला को कैसे ऑफ करना है। ठीक है दारू तो किसने पी? ठंडर ने। वो ना बाइक लेके गया मेरा दोस्त, वही पीता दारू के साथ। ये कॉमिकॉन आ रहा है कलकत्ता में, जाना है? बट अभी नहीं साला, फरवरी में आएगा, पर 2-3 महीना वेट करना पड़ेगा। चलते हैं लेकिन मजा आएगा यार। अंडर आइसक्रीम और Come on, you stiff-necked fool! What possible interest would I have in spying on this pathetic little outpost you got here? You see, that is precisely the kind of thing a spy would say, particularly when she was caught creeping around near our... Tell me this then, Sir Wisdom. What exactly would I be wanting to learn? How you scratch your arse in an iron suit? Ha! Trying to distract me with insults, eh? But it won't work. Sweet time getting here. I was sizing up the pirate base until this suspicious sod nabbed me. Can you tell him I'm not a spy? क्या नाम है उसका, कार्डबोर्ड के अंदर रख के वैसे ही। Yeah, very funny. ठीक है, हम पूरे कॉमिकॉन में बेच Ah, well, और नहीं तो क्या, कुछ if खाएगा, you know कुछ her, खाने देगा, कुछ then I बेचेगा। suppose that we could give her Business भी हो another गया, घूमना chance. भी हो गया, खाना भी हो गया। But I'll have my eye on. स्टॉल तो लगाया जा सकता है। Better keep your eyes to yourself, unless you want them poked out. हमें यहाँ गेम खेलने, मतलब गेम देखने जाना है, लोगों को देखने जाना है, बड़े सामान बेचने नहीं। क्या हो गया? पेमेंट could not be successful. तू कौन सा आर्क चूज किया तो टुकड़े? हीलर, मिस्टिक वाला, तो टट्टी आर्क टाइप है। क्या हो गया यार, पेमेंट क्यों नहीं जा रहा, क्या हो गया? भाई तू हील खेलेगा ना? क्या हो गया? ये तो क्या खेल रहे हैं हीलर्स तो जी। अरे ये चोमू लाइव स्ट्रीम करके रखा है, लाइव स्ट्रीम चल ही नहीं रहा। हाँ वो ज्वाइन नहीं कर पा रहा। अरे वो खड़ा होने पे तो दिखाता है, वो भी नहीं दिखा रहा। लोड चंद डिस्कॉर्ड की मैं बोला ना तेरा नेट का इशू आ रहा है, मुझे कह रहा था तेरा नेट है। ए पुपू भगना मैं कुछ ट्राई करता हूँ। ट्राई कर रहा है इसके लाइव स्ट्रीम पे क्लिक करें ना, लोडिंग ही ले रहा है बस। तो अब लाइव स्ट्रीम है भी तो देखने के लिए यहाँ पे अभी तक लोडिंग, कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं आता सर। ना ना ये मेरे फोन पे से पैसे क्यों नहीं आता है? बैंक में दिक्कत है क्या कुछ? बहन के लड़े पैसे नहीं भेज पा रहा, ये क्या गंड को बता देता हूँ, पैसे नहीं जा रहा।
ये कौन कौन सा आवाज निकाल रहा? अरे फोन कर रहा था मेरे को, नहीं, वो किया था वाला पलट जो नहीं गलत होता आवाज आया। तो फिर कुकू निकल रहा होगा, अभी टेस्ट कर रहा बोला ना कुछ। क्या कर रहा होगा? मैं क्या कर रहा हूँ भाई? मैं तो कुछ कह ही नहीं रहा, मैं तो अपना कुछ काम कर रहा हूँ। तू ही तो बोला टेस्ट कर रहा हूँ कुछ। देख हाँ, यार, मैं बोला ना। तो हमें थोड़ी ना पता तू क्या टेस्ट कर रहा है, और बुके को कुछ सुनाई दिया अजीब सा। हाँ, किसी का तो मौन इसीलिए सुनाई दिया। मेरा माइक भी इसीलिए से बंद हो गया। हाल के देख तो रहेगी तेरे माइक का है जिसके मैं आया एक सेकंड। ये सारा राजू आवाज निकाल रहा है, दूसरे पे डाल दे रहा है। हाँ। ये शुरू से ही ऐसा था, हरामी। साला पोपो कह रहा है कि कुछ कर रहा है अभी। आकाश नहीं आता ना, अब उसकी जगह लेना चाहता है, मंथरा बनना चाहता है, ये आकाश नहीं आता। लड़ाइयाँ करवाएगा। साले भाई आकाश आकाश को ने तो जो बीके का आकाश जीना आराम किया था ना, जब ये वो था सेंटिएंट, ओ हो मजे आते थे, हर रोज आके बताता था। बीके को मैंने मैसेज किया, थ्रो कर दिया उसने, मर गया। बीके को मैसेज किया, मर गया वो। भाई वैलोरेंट का नाम मत लो भाई, कोई मॉडल का रैंक अप से कैसे मॉडल नहीं जा सकता है। लगातार 10-12 मैच हारने का गम है, उसके बाद ही खेलने छोड़ दिए भाई, नहीं खेल रहे, गंदा गेम है, बहुत गंदा गेम है। वैलोरेंट है ही गंदा गेम, शुरू से ही गंदा गेम था। लेकिन साला क्या करे, बंदे देखते भी तो वैलोरेंट ही है, ये भी तो साला चुतियाप है एक तो। नहीं रे, चेंज हो जाएगा। बहुत मैं नहीं, बहुत लोग एफपीएस गेम से वो इरिटेट हो रही है। हाँ, होते हैं बंदे, लेकिन नहीं, रेगुलर प्लेयर्स होंगे, नए प्लेयर्स अभी भी वैलोरेंट वगैरह खेलने शुरू करेंगे, बट हाँ, थोड़ी थोड़ी देर वही बाद बात। छोड़ देंगे। बहुत टॉक्सिक एनवायरनमेंट है, फायदा नहीं खेलने भाई मैं प्लस एंड ये वो तो था ना गैप, वो नहीं रहा वैलोरेंट में, अब बहुत ज्यादा सैचुरेटेड है वो। तुम अगर सोच रहे थे कि नए प्लेयर की तरह बट मतलब, उसपे ना ये नेट का बहुत ज्यादा ये है वही गेम कह में। रहा हूँ ना, पिंग डिपेंडेंट गेम है हाँ, बहुत। बहुत ये ज्यादा, गेमिंग बहुत सारी ज्यादा। एफपीएस गेम पिंग डिपेंडेंट गेम है, इसलिए कोई फायदा ही नहीं खेलने का तुम्हें। स्किल्स मतलब ठीक है, एक पॉइंट तक स्किल्स है, हाँ, बट अब स्किल मैटर करेंगे, उसके बाद वो सिर्फ पिंग मैटर करने लग जाती है। हाँ, अब सबका सेम पिंग है तो समझ में आ रहा है, चलो स्किल्स पे खेल रहे, बट भाई हायर लॉबीज में जितने भी बंदे आते हैं ना, सब वो सारे मुंबई 10 वाले पिंगर आते होते हैं। हैं, अंडर 10 हाँ पिंग हाँ होंगे। हाँ, इतना मुश्किल इससे से क्लियर स्ट्रगल पता करके। चलता है कि पिंग बहुत पिंग डिपेंडेंट है। सीएसगो में इतना नहीं होता, सीएसगो में तुम्हारे को हाई पिंग प्लेयर्स भी मिल जाते हैं, हाई लॉबी में 60 70 80 वाले भी इजी। सीएसगो में नहीं इतना होता है। नहीं भाई, यहाँ तो एसेंडेंट और इमॉर्टल में तो 10 वैलोरेंट पिंग वाले ही Bravo, मिलते my हैं। तू bold हाई लॉबी friend! एसेंडेंट लॉबी I एंटर कर, feared the pirates would 80% लोग तेरे overwhelm को you, लो पिंग but it मिलेंगे, seems और you are अगर तू nigh एसेंडेंट से ऊपर unstoppable. चला जाएगा And तो I suppose if you're willing 95% to लोग तेरे vouch को लो for पिंग Miss मिलेंगे। भाई इमॉर्टल O'Malley, लॉबी we'll खेलता give हूँ, her the पता है benefit of the इमॉर्टल doubt. लॉबी में ना बंदे For पहले बात तो the woman ये क्या claims बोलता है, she रहते snuck ही into नहीं है the लोपिंग pirates' वाले। den and there are और अगर hundreds आ भी गया within. ना कोई लोपिंग वाला, But तो can सब we बस really बजने आता है trust साला, her? खेलने After नहीं। all, she is a pirate herself. अच्छा, तो मेरी बात नहीं कर रहा, तू ऑपोजिट कह रहा है। हाँ मतलब वही। Very well then. If नहीं, she's बंदे to हैं be ऐसे नहीं बोल रहा, believed, the बट source of this plague on मैक्सिमम our जो भी है lands ना may वो well मुंबई be वाले हैं या फिर inside. दिल्ली या We'll have to महाराष्ट्र hear वैसे her टाइप के account लोग हैं। yourself. If you're willing to venture into the den on her word, then so be it. पता नहीं, We'll अभी hold setting this वेटिंग नहीं position, कि बस but plug be करके रखा हुआ है। wary. कौन The सा माइक pirates है? were क्योंकि ऐसा fierce माइक even लग रहा है before मैं तो becoming ये lost. कट 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 की आवाज तब आती है जब तू जैसे लाइक जो होता है ना उसका नॉइज एक लेवल होता है, उससे ऊपर नीचे हो रहा है। अब पता नहीं, वो सेटिंग वेटिंग का कुछ नहीं पता, क्योंकि इसका सॉफ्टवेयर वगैरह भी डाउनलोड नहीं किया। कौन सा माइक है? मतलब कितने कितने मिले? करा ले। Well, now, I do hope you straightened everything out with Sir Pain in me arse. I tried to tell that sod, if you want to defeat these pirates, I know the way. ये देखना पड़ेगा फिर क्या सीन है। Not spying so much as taking a measure of the place. Heard there were pirates up here. Thought they might be sitting on some valuable loot. तो ये वाला फिल्टर हटा क्वालिटी नहीं लग रहा And माइक। they've got some तक शुरू loot, होगा भाई, sure ये enough. ZX के माइक में भी प्रॉब्लम But they don't even seem to care about it. मैंने तो माइक टेस्ट guess किया, that's what उसमें तो happens आवाज when नहीं you आ रहा lose था your ऐसा soul. कुछ। रुक जा मैं रिकॉर्ड करके तेरे को। I'll tell you. But if you go in, I'll be expecting some treasure in exchange for my information. I worked hard for it after all. So here it is.
There's a glowing altar in there, and the bastards are drawn to it like flies to a carcass. Smash the damn thing, and I bet कविता ही they'll all बोल दो buzz साले। off. तो एक को गाली दे देता हूँ एकदम कविता के नाम पे। तो बोल कुछ तो बोल। For someone like you, maybe. इतना Not लंबा for चौड़ा me. बात बोला। But तो hey, कुछ don't नहीं forget our record हो पा deal. रहा है। Snatch me up some valuables in there, and we'll be that much closer to getting a ship. ये अच्छे से भी समझना जरूरी है ना। हाँ बात तो वही। नहीं तो वापस जाएगा वापस में क्या प्रॉब्लम है? अबे कितने 25 MB का भी फाइल में सेंड नहीं कर सकता व्हाट्सएप पे भेजना। हाँ ये तो ऑडियो तो ठीक रिकॉर्ड Have you हुआ है। ever met such coordinated pirates? It's like they went to school or something. How will people ever find their way to Pridewin if they can't even survive this beach? इसका कोई सॉफ्टवेयर भी नहीं है कि मैं सॉफ्टवेयर डाउनलोड करूँ इसको कंट्रोल करने के लिए। I was a baby and an absolute terror. Folks here say I used to leap out from behind trees and startle them. My bag had a fleur-de-lis, and I spoke a little French back then. Royal? Ha! Hardly. I just want to make these pirates cry for their mothers. If only they didn't have so many weapons and barrels of gunpowder. Oh, what a good way to turn the barrels on them. Sneak up on the pirates, light their barrels, and then boom! Pirates blown to pieces! I'll keep watch here and make sure no one foils our grand plan. डिस्कॉर्ड में तेरा वो जो है ना नॉइज सेपरेशन वाली जो चीजें एक बार बंद कर अगर ऑन है तो अभी जस्ट ऑफ किया तो बात कर जब तू बोला भाषा के बात कर बात तो वही बात तो वैसे कर ऑफ कर चुका हूं हो जाएगा शॉट साउंड ये क्या कंट्रोल लॉर्ड ऑफ योर पर्सनल पता नहीं इसको देखना पड़ेगा फिर सेटिंग ऐसे जो तू वो करता है ना क्या कहते हैं उसे कोई ऑडासिटी में रिकॉर्डिंग है वो भी इसमें जब रिकॉर्ड हो रहता है ना किसी के साथ नहीं वही देखो वही मैं तेको ऑडियो सेंड करता रहूं सुबह ही रिकॉर्डिंग मम्मी रिकॉर्ड कर देती मम्मी क्या रिकॉर्ड गाना नहीं करती हाँ मम्मी गाती है ये देख इसको सुन और रेडिंग क्या हो रहा है कहाँ भेज रहे डिस्कॉर्ड पे भेज रहा भाई न्यू वर्ल्ड खेल रहा है तो कोनो रिकॉर्डिंग चलाने जा रहे हैं देख ये तो बैन आ गया आ गया वापस ए एमी क्या कर रहा है कुछ क्वेश्चन लगाने जा रहा था बताओ क्या करने जा रहा था वो क्या होता है सवालों के जवाब दे मैं कौन से क्वेश्चन सवाल ही लाप्लास के फ्रीक्वेंसी के बिल्ड किए देगा इसके लिए मैं कॉपी किताब लिख के बेंच सारा दिन दिमाग में तरोड़ने माइक में पूरा रिव्यू देख के मंगाया और ये माइक ये माइक डिस्कॉर्ड पे जाके चेक करना वॉइस एंड ऑडियो वीडियो पे वहां पे इनपुट में यही वाला सेट है ना देख लो हाँ यही है वरना देखो कैसे आवाज आता मेरा अगर नहीं रहता तो मैं स्क्रीन शेयर करता हूँ मजा आती है कुछ से बात करने में देख यहाँ गया सेटिंग में यही है देख क्रू कास्ट
इसका वायर का एक कट 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 का वायर कट गया। अरे नहीं वायर का नहीं है भाई, वायर तो इसमें ये दिया हुआ है। देख लीजिए हम क्या रहा देख लीजिए डिस्कॉर्ड एक बार कॉल करके चेक लोग क्रेजी को भेजता हुआ एक बार डिस्कॉर्ड रिस्टार्ट या फिर नहीं होता तो डिस्कॉर्ड रीइंस्टॉल करो। अभी शायद साउंड नहीं आ रही तेरी वजह से। ये क्या वक्त एक काम करो, सेटिंग ओपन करो, सेटिंग ओपन करो। उसमें वॉइस नहीं दिखाओ, वॉइस एंड अभी नहीं आ रही, अभी अभी सही है। ओके, एक काम करो, steelseries.com डाउनलोड करो, उसमें से माइक करके इसका माइक सेट कर दो। कहानी खत्म कर अभी दो। सही आ रहा है, अभी दिक्कत नहीं आ रही, अभी नहीं आ ये वाला जी हाँ, स्टील सीरीज जी कोई दिख नहीं रहा था भाई, तुमने डिस्कॉर्ड लाइक पे स्ट्रीम लाइव में। अबे ये सब मत कर, अगर तेरे को वॉइस इनहांस करना है ना तो वॉइस मीटर डाउनलोड कर ले। हां मैं तो ये बट वो वॉइस मीटर डिस्कॉर्ड के साथ कनेक्ट है ना? हां होता मैं बताता हूँ, अरे सब होता है। अरे उसको क्या करता है ना, तू अभी जैसे तेरा नॉर्मल जो माइक है ना उसका दे रहा है ना इनपुट, नहीं वो तो ऑफ कर रखा है। नहीं मैं वो नहीं कह रहा, मैं दिखा रहा हूँ, मैं देखो क्या कह रहा था, मैं ये कर सकता हूँ। ये डाउनलोड कर नहीं रुक, मैं बताता हूँ कि हाँ वही हाँ ये भाई देख मैंने तो मेरा है ना क्या हो गया, देख मेरा लाइव देख। बट ये क्यू वाला काम करेगा स्टील सीरीज के सॉफ्टवेयर में? अरे ये वॉइस एंड ब्यूटी में जो यहाँ पे जो एवरी फाइल स्टील सीरीज कर रखा है, यहाँ से सब लाइव करता है। हाँ भाई सब लाइव। तेरे को सिर्फ ऑडियो कैप्चर करने के लिए थोड़ा तेरे नहीं उसका एक ये भी है इक्वलाइजर ना, क्या उसका एक वो भी है ना जिससे वॉइस डाउनलोड करो, आवाज उसका और ज़्यादा अच्छी हो जाएगी। स्टील सीरीज में जानते हो तुम्हारे पास ऑप्शन रहता है तुम कौन सी चीजें बढ़ाना चाहते हो, तुम पिच तो बढ़ा दो, पिच बढ़ा के छोड़ दो। हाँ एक करते हैं। वॉइस मीटर बेस्ट है, वो वॉइस मीटर ना स्ट्रीम करने के वक्त भी बहुत काम आता है, ये तो पक्का है। ये वीवी ऑडियो वॉइस मीटर ये वाला ना वही है, वॉइस मीटर काम नहीं आएगा वो। यही है ना, ये कब याद है वे कब इस्तेमाल करते थे, जब पहले स्ट्रीम करते थे। करती थी तो उस टाइम लैग होता था। हाँ उस टाइम नहीं हो पाता था। हाँ यही वाला ही है। मैं पीछे मेरा सुपरमार्केट भी खुला है। अरे ऊपर ही चला गया देख। क्या है यही है, रुक एक तो ये तो हो जाने दे, ये तो वाला। अरे ये हो तो जाने दे, स्किल सीरीज एक बार में एक ही देख लेते हैं। अरे यार ये सब बकचोदी है। आईडी बनाना पड़ता है। क्या करना है इन्हें? क्या करना है इधर? इधर होम में जा, होम ये तो होम पे ही हूँ मैं। सोनार पे, सोनार होम पे, सोनार पे क्रिएट स्टैंड है
अगला पता होना चाहिए। Oh yes. नेक्स्ट तक छोड़ दिया था कुछ। ये तो सब माइक्रोफोन पे बस मैं कहाँ हूँ मैं किधर हूँ। ये ऑन करने क्या? नेक्स्ट कुछ नहीं ओ यार स्पीकर तो क्या उसके जैसा ही है। स्पीकर पे आ स्पीकर स्पीकर पे? माइक हाँ वही ना माइक स्पीकर कहाँ जा रहे हैं हम लोग? इसको नहीं कुछ करना है ना, फ्लैट ही रखना है ना। इसमें कुछ नहीं इसमें तुम सुन सकते हो जब पसंद आएगा वो करना। ओ अजय तो मतलब वो कुछ सेट प्री सेट से वो कर सकते हैं। जैसे मान लो तुम्हारा नहीं प्री सेटिंग है उसमें फ्लैट पे क्लिक करो सेटिंग पे बात करो ना। अरे ऊपर फ्लैट पे यार इनमें चेक कर सकते हो कौन सा पसंद है इसी में पिच अच्छी है। मान लो तुम कैसे बोलोगे ना साफ शायद तो पीछे का जो चीज़ें जो साउंड वेरियर्स वो ना नॉइस कैंसिलेशन उसके लिए अच्छे कुछ चीज़ें साउंड बम करते हैं ये बहुत सुनो सुनेगा अभी तुम्हारा एक्टिवेट नहीं हुआ है पहले तुम बताओ करना माइक पे पहले क्लिक किया हाँ सोनार क्या गया सोनार पे तुम्हारा क्या होता है पैसा करो और सोनार पे क्लिक करो यही है सोनार मिक्सर पे क्लिक करो मिक्सर पे माइक पे क्लिक करो माइक पे उसके नीचे क्लिक करो उसके नीचे क्लिक करो यही है इसी से बात करनी है इसी से बात करनी है। अरे नहीं मतलब इसी से बात करनी माइक्रोफोन करियो से हाँ इसी से बात करनी है इसीलिए तो यही इनपुट रहेगा तुम्हारा हाँ ओके अब उसमें आ जाओ इसका ऑर्डिनेटर आ गया सेटिंग में वॉइस एंड वीडियो यहाँ पर माइक्रोफोन पीरियड क्रॉस्ट वही रहेगा ये वाला स्टील सीरीज का माइक्रोफोन डिफॉल्ट पे डाल देता हूँ ना इसको हाँ यही यस अब बोलो अभी कैसी आ रही है ऑडियो भाई तुम्हारी आवाज़ एकदम मक्खन आ रही ओके मेरे को सुन टेक्स्ट कर हाँ आई थिंक ठीक है मैंने डीप वॉइस सिलेक्ट कर रखा था तो उसके हिसाब से आप तो यहाँ से चेंज कर सकते हो ना डीप वॉइस बहुत गंदा लग रहा है और करो बताता हूँ कौन सी करनी ये इतना सही है क्लैरिटी को कर लो सब ट्राई करो ना टेंशन के साथ ठीक है डीप वॉइस ज़्यादा अच्छी क्लैरिटी का डीप वॉइस नहीं क्लैरिटी का हाई पिच है हाँ बहुत और ये वाला ठीक लग रहा है और भी ट्राई करो सारे ट्राई बैलेंस करके भी चेक कर लो और ये बैलेंस पे है जो मैं बोल ये भी ठीक लग रही है डीप से भी ठीक लग रही है देखो मेरे को सुनने ये बैलेंस बेटर है थोड़ा मेरा वॉइस मेरे जैसा लग रहा है वो सब में अलग लग रहा है मेरे को लेकिन तुम्हारे ऊपर डीप वॉइस ज़्यादा सटीक बैठ रही है मजाक नहीं कर रहा पता नहीं तुम्हारे बोलने का तरीका जो बोलने का तरीका है डीप वॉइस ही रखते हैं बोलने का तरीका ना उसमें डीप वॉइस लग रहा है कि हाँ क्रेजी के ऊपर डीप वॉइस क्रेजी लग रहा है even made you a squawk. सबसे बड़ा नहीं क्रेजी है ना हमारे में सबसे बड़ा Serpent sees the spark of a knight in me. I have to train more and fight more and impress the regent. But you'll see, I'll become a knight soon. Then everyone will call me Sir Ash. आउटपुट मेरा मैक्स है तुम लोग को बढ़ाना है मेरा तो हाँ मैंने कम कर रखा है ठीक है अच्छा कैसा हाँ ये ठीक है कैसे
ये बेटर हाँ भाई मैंने जो तुम्हारा बोलने का अच्छा इसको थोड़ा कट कर बहुत सकते हैं ना, रोज कट करने से ये नहीं होगा या फिर मिनिमाइज करके नहीं रखना नहीं पड़ेगा? नहीं, ये मिनिमाइज ही रहता है। ये उसमें क्लोज करो क्लोज। वही पूछा कट था क्यों कर अगर रहा क्लोज कट कर ठीक है, दो ये तो close। मिनिमाइज है, वो इधर देखो मिनिमाइज बार में है। ये तो यहीं चल रहा है तो बंद नहीं हाँ किया। तो क्लोज क्लोज कर दो ना। क्लोज करने से बंद हो जाएगा। नहीं नहीं मैं चलता नहीं रहेगा। नहीं चल रहा, बैकग्राउंड में चल रहा है। यहाँ से एग्जिट करना है। ये ऑन कर स्टीम की तरह साउंड्स में भी यूज कर सकते। एक और फायदा है स्टीम सीरीज की तरह, एक बार ओपन करो। Well, now look who made it in and out of the pirates' den safely. I knew you could do it. Unlike this इसमें sod. तुम सोनार में आओ, सोनार में Tell me, did you find that glowing altar? गेम पे क्लिक करो। हाँ See there, we make a good team. I go in first, all sneaky like the lay of the land. Then you follow up with force, taking care of business. Of course, for a partnership, it's vital all parties profit in a venture. वैलोरेंट डाल के देखो ना, वैलोरेंट वैलोरेंट डाल सकते हैं। बेबी गीत वाला एक Now that's a right decent friend. कैसा आवाज आ रहा है इसमें? ये तुम्हें पता चलेगा कैसा आवाज आ रहा, हम पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैं डिस्कॉर्ड में इसका इफेक्ट नहीं आएगा। नहीं नहीं, ये इनपुट नहीं है, ये आउटपुट है तुम्हारे लिए। हम अच्छा जो बोल रहे हैं वो आवाज में फर्क है। ओह अच्छा, ये मेरे को सुनाई देगा, वो बोल रहे हो। इन गेम में जैसे होता नहीं कुछ चीजें, मतलब गन का साउंड बहुत तेज होता है पर क्या कहते हैं फुटेज से बहुत स्लो होते हैं, सुनाई नहीं देता है। No surprise there. Miss O'Malley gets what she wants and disappears. I do hope your courage accomplished more than padding her coin purse. I can only imagine the filth you had to wade through to reach the heart of the pirate's den. Did you find the foul sorcery Miss O'Malley claimed was there? Interesting. Perhaps that's why we're seeing even fewer of the scoundrels coming ashore than before. This revelation should be taken back to the Night Regent with all haste. के साथ भी चलेगा ये। I must keep vigil here. Ensure these scoundrels don't attempt any further incursions to the south. You must go alone and go quickly. Use the spirit shrine to return to Pridewen. It's a bit jarring, but time is of the essence. और यहाँ पे हम प्रायोरिटाइज भी कर सकते हैं गेम वर्सेस चैट। यहाँ पे दिया कि किधर ऑडियो ज़्यादा प्रायोरिटाइज है। हाँ ऑडिसिटी से ज़्यादा असल में बात पता है, कोई ना बढ़िया होता ना कोई बेकार होता है। जिसको जितना बढ़िया तुम चला लो अपने को थोड़ी प्रोफेशनल सिंगर बनना है, इसको लेके काम अच्छा होना चाहिए बस। पिछले 3 दिन से ये सुपर मार्केट ही खेल रहे हैं, मतलब बोर हो रहे हैं। हम भी निकले खाना क्या? चल आया मैं बाद में ठंडा। ठीक है।